Hello dear students, today we will discuss worksheet number 30 class 9th motion velocity. Jigyasa Didi, what is velocity and how it is different from speed? Gyan, speed of an object is in a particular direction is called as its velocity. Like speed, it is also represented by v. It shows the direction of motion of the object along with its speed. Velocity of an object can be determined by this equation. Velocity is equal to displacement upon time. यानी किसी निश्चित दिशा में जो चाल है वो उसकी वेलोसिटी कहलाएगी. It is a vector quantity whose magnitude changes with changes in speed and direction. Its SI unit is also meter per second. It can be 0. If you cover the distance from your home to school and back from school to home by the same route in 10 minutes, in this situation you will have speed, but here the displacement is 0. Therefore, your velocity will be 0. When an object is moving along a straight line with a changing variable speed velocity, we can calculate the magnitude of its rate of motion in term of average velocity by the following. यानी वेलोसिटी अगर बार बार चेंज हो रही है तो आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं. इनिशियल वेलोसिटी u प्लस फाइनल वेलोसिटी v अपॉन 2 करके. दिस इज द फॉर्मूला. Didi, when do we say that an object is in uniform motion or not, and what happens to the velocity in that condition? Gyan, if an object moves in a straight line and covers equal distance in equal time intervals, we say that it is in uniform motion. यानी वो uniform motion में है यदि एक ही स्पीड या एक ही velocity से वो मूव कर रहा है. In this case, velocity of the object remain constant, but if the object travel unequal distance in unequal time travels, then it is said to be इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे कि आप भीड़ में बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं, कभी धीरे और कभी तेज. इन दिस सिचुएशन द वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट. इट कैन बी ऑफ टू टाइप. एक्सीलरेटेड मोशन, इन दिस वन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विद टाइम, यानी जब आपने स्पीड बढ़ा दी बाइक की. रिटार्डेशन मोशन, इन दिस वन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं घट रही है स्पीड या आप एक्सीलेटर से स्पीड को कम कर रहे हैं. एग्जाम्पल, इफ़ अ साइकिल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विच आर 40 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देन अगेन कम्स बैक टू पॉइंट ए एंड टेक्स 40 सेकेंड टू डू सो, then find out the speed and velocity of the cyclist. Solution: displacement is equal to shortest distance between point A to point A, that is 0, and total distance 40 plus 40 is equal to 80 meter. Total time taken 40 second. So speed is equal to distance covered upon time taken. 80 upon 40 is equal to 2 meter per second. But velocity wants displacement. Velocity is equal to displacement upon टाइम टेकन. तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो टाइम टेकन 40 सेकेंड, तो वेलोसिटी भी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई है. लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन. डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड. तो आप ऊपर देख के कर सकते हैं आराम से कि वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड हैज़ ओनली magnitude and it is a scalar quantity. Velocity can be 0 but speed cannot be 0. Number 2, if a car travels 100 meter in 25 seconds, then find out its velocity. Displacement s is equal to given 100 meter, time taken is equal to 25 seconds, then velocity is equal to s upon t, displacement upon time. Then 100 upon 25 is equal to velocity is equal to 4 meter per second. If a cyclist is going with a constant velocity on a highway, then identify the types of motion it has. It has uniform motion.
बिकॉज उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, तो वो है यूनिफॉर्म मोशन में।